Hello students, I am starting your second lesson of mathematics, polynomials. First lesson we will go after this. Reason being, the first lesson you are more aware of that. In class 9th also you have studied the polynomials and you have done enough exercise on factorizing of polynomials, a splitting of middle terms, and we will go here for quadratic also. Now pay attention. I am going to explain you all. Okay? Now see. This polynomials. It is expression, how you express a polynomial. It is a, generally if you ask simply they will say ax plus b, ax square plus bx plus c. One is a linear polynomial, another is quadratic polynomial. Right? Similarly, you come to this part, ax0. See, ax0 means it is 1. You can take it 1. Simply you can write a0 also. That is not a problem. You can write it. ax0. I have given that to understand you better. a0 x0, a1 x1, a2 x2, a3 x3, a4 x4, so on, an x1. So here, what is that? An is not equal to 0. An is not equal to 0. The polynomial x is having degree. How much? X has got degree, that is the power. Here degree is the power. So x has got the maximum degree. How much? Up to n. N may be what? N may be 0, 1, 2, 3, up to n. The power may be anything else. The power of x is a non-negative. So power of x, that is n, will be never negative. Never negative. And will not be ये negative हमेशा कभी भी n negative नहीं होगा. n will not be negative. n will not be negative. So x to the power negative नहीं होगा किसी भी तरह के polynomial में. ठीक है, अब हम चलते हैं इस पावर पर एक्सप्लेनेशन. सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. मतलब वो पॉलिनोमियल जिसके x टू द पावर 1 होगा. दैट्स इट. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. से px is your polynomial, so ax plus b. You can write where a is not equal to 0. So ax plus b you can write it. You can write 2x plus 3 is a polynomial. 5x plus 9 is a polynomial. Root 2x plus root 3 is a polynomial. But root 3x plus 2 is not the polynomial. Because here power will be in fraction. क्या polynomial होगा? नहीं हो. Similarly, 3x to the power minus 1 plus 1 is not the polynomial. 4x plus 1 is a polynomial. So these are like this. Okay? So this is a polynomial having degree 1. Here degree is 1, here degree is 1, here also degree is 1, here degree is not 1. Here also, but here degree is 1. तो जहाँ डिग्री 1 है x में, तो ये पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इज 1. आप ये कह सकते हो कैसा भी हो, आप एस्यूम करके चलोगे x टू द पावर 2x प्लस 1x प्लस 5 पॉलिनोमियल है. लीनियर पॉलिनोमियल हाँ है. 2x प्लस x को हम 3x काउंट कर लेंगे, 3x प्लस 1. सो इट इज ए linear polynomial. Polynomial having degree 1. Is it clear? Have you understood now? Now quadratic polynomial. Again, the polynomial having degree 2. अभी से पहले बताया था linear polynomial having degree 1. अब quadratic polynomial having degree 2. How it is that ax square plus bx plus c. ऊपर वाला आपका ax plus b था, यहाँ ax square plus bx plus c. a is not equal to 0. अगर a 0 हो जाएगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा.
अगर यहाँ पर a इक्वल टू 0 है, अगर यहाँ a इक्वल टू 0 होता तो ये पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाता, क्योंकि इसका वेरिएबल खत्म हो जाता, x खत्म हो जाता, कांस्टेंट रह जाता। यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाए तो ये हो जाएगा bx प्लस c। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा क्वाड्रेटिक की जगह। सो लीनियर पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a is not equal to 0. Another example you can say 2x square plus 3x plus 1 5x square minus 2x plus 3 3x square minus x minus 1 7x square minus 7x plus 1. So like this, these will be your quadratic polynomials where the power is 2, where the power on x, maximum power on the x is 2, where maximum power on the x will be 2. The polynomial having one of the value of x whose power is 2. Now we are discussing to the part. We have shown you that what is a linear polynomial. Then we have discussed you what is a quadratic polynomial. Now children, we will go for the cubic polynomial. See this part, linear polynomial having the value of degree is 1. That is x to the power is 1. Quadratic polynomial having degree is 2. That is x to the power is 2. Now cubic polynomial having degree is 3. X to the power is 3. For example, cubic polynomial degree is 3. So you can see px equal to ax cube bx square plus cx plus d where a is not equal to 0. अगर a 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रह जाएगा, ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। और एग्जांपल ले सकते हो इसकी जगह पर, एक तो कांस्टेंट है, इसकी जगह पर ले सकते हो, जैसे 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 3। क्यूबिक पोलिनोमियल 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर plus 2x and plus 1. You can say another 7x square x cube plus 4x square plus 2x plus 1. So like this you can go ahead with that cubic polynomial where the power of x is maximum is 3. Power of x is 3. So we have discussed the cubic polynomials. Now we will discuss biquadratic polynomials where the power of x is 4. Here a polynomial of degree 2 quadratic, a polynomial of degree 3 cubic, a polynomial of degree 4 is biquadratic. For example, px equal to ax4 plus bx cube plus cx square plus dx and plus c where a is not equal to 0. If a is equal to 0 then it will be cubic polynomial. ये 0 हो जाएगा और ये cubic polynomial रह जाएगा। दूसरा एग्जांपल, क्योंकि इसका पावर x equal to 4 है maximum. So now let's come to the part 5x4 3x cube plus 2x square plus 2x plus 1. So this is your biquadratic polynomials. Biquadratic polynomials 8x4 plus 2x cube plus 2x square plus 4x plus 1. So this is the both example I have given you. This is the example of a biquadratic polynomial. It is also the example of biquadratic polynomial. So children, I have given you a0 x0, a1 x1, a2 x2, a3 x3, a4 x4, a5 x5,
an xn up to you have gone. These are the, it is a polynomial where a is not equal to 0. ठीक, n is never negative. N is never negative. So I told you linear polynomial where ax plus b, a linear polynomial having degree 1, ax plus b where a is not equal to 0 and degree is 1, ax square plus bx plus c where degree is 2 and a is not equal to 0. That is a quadratic polynomial. Now cubic polynomial aq plus bx square plus cx plus d is a cubic polynomial, that is a polynomial of degree 3, and quadratic polynomial that I have to do biquadratic polynomials where the degree is 4, and for example ax4 bx3 cx square plus dx plus e equal to 0 where a is not equal to 0. I have explained you the definition of these polynomials. Today I will tell you what are the, how can you calculate the zeros of the polynomials and what is the coefficients. We will discuss on that and then we will go for the numerical on that. Okay? Now please write it and let me finish it off the next chapter, this part. Please enlarge it and show it. So good. Just see that, children, because these things, the theory part, you should understand. Later on we are going to explain you all regarding the zeros of polynomials and what is the relation between zeros and coefficients of quadratic polynomials. Today I will teach you the zeros of the polynomials, relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomials. Zeros and coefficient of quadratic polynomials. Okay, let me jump it off. हो गया होगा, इसमें बच्चों ने लिख लिया होगा कि नहीं? हैं? समय कम तो नहीं था? सर रिकॉर्डिंग में जरा ध्यान. Okay, now children, come to that part. Now, it is what? It is a quadratic polynomial. Very clear, it is a quadratic polynomial. So Px. What will be zeros of this polynomials? Let me ask you zeros of this polynomial. How can you do that? There should be the value of x in such a way that it should come 0. Say zeros of the x value is 0. So it should be 0 minus 0 minus 3. So what will be zeros of the, you will find out x value should be such that it should come equal to 0. Now see, what probabilities are there? What probabilities are there? Best thing is that factorize the middle terms on the rough places and you will be able to get that. See, what is the x square minus 2x minus 3? X square minus 3x plus x minus 3. Now take the x common, x minus 3 and take plus 1 common, x minus 3. So x plus 1 into x minus 3. So what are the value? The minus 1 and 3, minus 1 and 3 is the zeros
of quadratic polynomials. तो जब भी आपको जीरो जाए तो आप इसको रफ में कैलकुलेट कर लो, इनके जीरो निकाल लो। अब जरा देखो p -1 अगर हम डालते हैं तो -1 का स्क्वायर -1 -2 into -1 and -3. So what you got it? Just see that -1 का स्क्वायर is 1 and -1 into -2 plus 2 and -3. So therefore 3 minus 3 equal to 0. You are getting that. 1. Second one, p equal to 3. Put the value equal to 3. So 3 square minus 2 into 3 and -3. Check it. It is 9 minus 3 to the 6 minus 3 equal to 9 minus 9 equal to 0. So that x has got the two variables -1 and 3. So we say that the zeros of quadratic polynomial is -1 and 3. Coefficients of that zeros of -1 and 3. इसी केस में अगर मुझे ऐसा भी पूछना पड़े, what is the sum of the zeros of the polynomial? What is the sum of the zeros of the polynomial? Sum of the zeros of the quadratic polynomials equal to, what are that? -1 and +3. The value will become 2. -1 and +3. This will become 2. -1 and +3 will become 2. And 2 is the coefficient of what? 2 is the coefficient of x. 2 is the coefficient of minus x. We will explain. 2 is the coefficient of minus x. Similarly, this is the basic of that. We are going to explain you much in details. Okay? So, now we will tell you the derivation of sum of the zeros of quadratic polynomials is what, and product of the zeros of quadratic polynomials is what. So हम आपको sum of the polynomials and products of the zeros of the polynomials हम आपको बताएंगे derivation. उसके बाद इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है? Okay, let me proceed. तो सुना इस साइड को हम रद्द कर लेते हैं. ओके, what is the relation between zeros of quadratic polynomial and its coefficients? Coefficient. हम इसके रिलेशंस को निकालें. You know that what is a quadratic? A quadratic, let's say the quadratic polynomial b px
equal to ax square plus bx plus c. And the zeros of the polynomials b, alpha and beta. Zeros of the polynomials b, alpha and beta. Therefore, factor of polynomial will be as x minus alpha into x minus beta, and hence will be as. Hence, now we are going to do ax square plus bx plus c equal to k into x minus alpha into x minus beta, where k is constant. देखो ये डेरिवेशन पार्ट है, एग्जाम में डेरिवेशन तो जनरली नहीं आता, फिर भी तुम ध्यान में रखो कि अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो उसका जीरोस क्या होगा? माने x की दो वैल्यूज यहाँ पर थी, सिमिलरली x की दो वैल्यूज मान लो अल्फा और बीटा है, और ये दोनों वैल्यू डालने के बाद इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है। हमने उसे एज्यूम किया x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा इज जीरोस ऑफ द लाइन x माइनस क्या है यहाँ पर मिला था x प्लस 1 इनटू x माइनस 3, वैसे x माइनस अल्फा एंड बीटा विल बी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये जीरोस है, ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, देन इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा जो मैं फैक्टर निकाल रहा था, आप फैक्टराइजेशन किया, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो एज्यूम करो देयर में भी k मल्टीपल होता है। So ax square plus bx plus c equal to let k is a where k is a constant. Let where k is a constant. Now do this. K x square minus x into alpha plus beta मल्टीप्लाई किया, ये x से किया x स्क्वायर हो गया, यहाँ किया माइनस अल्फा x x माइनस बीटा x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा k x स्क्वायर माइनस k x इंटू अल्फा प्लस बीटा आप प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा, और ये इक्वल टू क्या है आपको, जरा हम इक्वेट करेंगे ax square plus bx and plus c. So gentlemen, x का मल्टीपल क्या है यहाँ पर a और यहाँ पर क्या है k. So k equal to a, पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए, x का वेरिएबल b है, यहाँ x का k अल्फा इंटू बीटा, so b इक्वल टू क्या हो जाएगा? Therefore k माइनस k, x का मल्टीपल है माइनस k अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b, करेक्ट? ओके, नाउ c, तीसरा है k अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c. नाउ लेट मी सी दैट k की वैल्यू, यू पुट द k वैल्यू इनटू दिस, सो माइनस a alpha plus beta equal to b, and here a alpha into beta equal to c. So therefore आपने k की वैल्यू यहाँ पर डाली थी, अब क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a, and alpha into beta
equal to C by A. So children, I have proved these two values. And sum of the zeros of quadratic polynomial is minus B by A, and product of the quadratic polynomial is C by A. C by A. Okay? So this I have proved you. You can go proceed by this. Now we will solve few numericals based on this, so that you will be able to understand better. अब इसके कोफिशिएंट्स भी हम आपको बता देते हैं. जरा देखिए, sum of zeros of quadratic polynomial इक्वल टू क्या है? माइनस, ये क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए क्या है? जरा गौर करिए, यहां पर बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x upon a is what? Coefficient of x square, coefficient of x square. a क्या है? x square का कोफिशिएंट है, अब b क्या है? x का कोफिशिएंट है. Similarly, the product of zeros of quadratic polynomial इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला था आपने? सी बाय ए. व्हाट इज सी? सी इज द कांस्टेंट अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. Coefficient of x square. So children, you have understood now what is the sum of the zeros of quadratic polynomials, product of that, and how the relation between the sum of the zeros of the polynomials, product of the polynomial, and having a relation with the coefficients. तो मेरा आज का टॉपिक है what is the relation between zeros of the quadratic polynomial and its coefficient in the quadratic equation. ठीक है? अब हम इसमें आपको न्यूमेरिकल्स देंगे जिसमें आपको देना है कि फाइंड आउट द zeros of the quadratic equation and the quadratic polynomials and coefficients. ठीक है? सो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. बाय द टाइम थोड़ा सा लिख लो इसको. ठीक है? Sure. Children, I am writing it off. Two x square plus 5x minus 12. 2x square प्लस 5x माइनस 12. ये आपके एनसीईआरटी बुक का आपका क्वेश्चन है, और यहाँ आंसर विभाग में भी है. 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12. अब हमें इसका जीरोस हमें क्या निकालना है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स. फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द zeros of the polynomials and verify the relation between the coefficients. Verify the relation between coefficients and verify
verify the relation between coefficients relation between, हमें relation between coefficients निकालना है, ठीक है। तो अब हमें ये समझना होगा कि पहले से जीरो किया px 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो अब आपको ये देखना है इसका जीरो क्या है, ठीक है। जरा समझने की कोशिश कीजिए, हम इसके दो वैल्यूज निकाल पाएंगे। कैसे, जरा देखिए। रफ में 2x स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग। 2x स्क्वायर 12 इंटू 2 24 और 12 इंटू 2 24। 12 इंटू 2 24 आ गया। 8 और 3 नहीं होगा। 12 इंटू 2 नहीं होगा। 24 12 इंटू 2 24। आपके पास 24 को फैक्टराइज करना है। 2 12 2 6 2 3, ठीक है। 8 इंटू 3, 8 और 3 का हम कर सकते हैं। therefore 8x minus 3x, 8 minus 3 is 5, 8 3 is 24 and minus 12. So this you got it. Now what we are getting is x अगर ले लेते हैं इसमें से, तो 2x ले लीजिए, तो x plus 2 4 8 minus 3 ले लेते हैं, x plus 3 4 and you are getting x plus 4 and 2x minus 3 and x की वैल्यू जीरोस लेना है, तो g implies zeros, so x का वैल्यू 2 आएगा रूट। that is the zeros of the quadratic equation। x equal to -4 और दूसरा हो जाएगा x equal to -3/2। there are two zeros you are getting zeros of the quadratic polynomials, right? You are getting zeros of the quadratic polynomials। 8 3 just verify 24, 8 minus 3 5 plus minus 3x plus 4। here you got it 2x then x plus 4, x plus 4 निकाल लिया, 2x minus 3, x equal to 3/2, 3 उधर जाएगा and 3/2 and दूसरा x equal to 4। so now sum of the zeros of quadratic polynomials, that is alpha plus beta, and that's equal to क्या आ जाता है तुम्हारा -4 plus 3/2, -4 plus 3/2, and that is equal to take the LCM 2 and -4 to the 8 and plus 3, you are getting -5/2 and the product alpha into beta क्या जरा कोफिशिएंट हम रिलेशन तो बनाए लेंगे। ये कितना है तुम्हारा -4 into 3/2 and that is equal to -4 3 is 12/2। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो 12/2। नाउ व्हाट इज योर, you have got -12/2। there are these two values you got it। sum of the zeros of the quadratic polynomial this and sum, it is a product alpha into beta and product of the zeros of the polynomials is this। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया x को और x को, दोनों को सम कर दिया, ठीक। x की वैल्यू को सम किया दोनों वैल्यू को और दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब देखिए 5 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ, अब ये इक्वेशन में देख लीजिए
What is the 5 negative? रहने दीजिए. Coefficients of x upon 2. Coefficients of x square. Coefficients of x square. सिर्फ x square. दूसरे केस में क्या है? -12 constant upon -12 itself is a constant. This two ये पूरा constant upon 2. Coefficient of x square. Okay, so I have given you both answer, value and this. Okay, so please do that. The next questions we will go into that. Please, on the R.S. Agarwal page number 45, please do that. Page number 45. I have done the example number 1. You do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You do at least 10. We will be doing few questions tomorrow also, right? By the time we have started it, complete it. Okay? So do page number 1. Again, I remind you, do all solved question by the page number 45, 46, page number 45 and 46 and 47. Thank you. I will meet you in the next class. Okay.